Good morning, students. We are studying chapter number 7, respiration in organism. Last time we studied about respiration, definition of respiration, cellular respiration, types of respiration. इसमें हमने 2 types की respiration पढ़ी थी, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic involves with the use of oxygen and anaerobic in the absence of ऑक्सीजन. इसमें एक्टिविटी आज कंप्लीट करते हैं हम एक. यस, पेज नंबर 104, एक्टिविटी 1. टू शो anaerobic respiration in yeast, take a conical flask, add some lukewarm water in which a teaspoon of sugar has been dissolved. ठीक है, ये आपके कॉनिकल फ्लास्क है. इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है और 1 शुगर स्पून डालनी है. Add a few granules of dry yeast to this solution. And what you have to do? You have to add dry yeast in this solution. It is available in the bakery shop. Dry yeast is available in bakery shop. Seal the conical flask with a cork. इसके साथ बंद कर देना है. Keep it at room temperature and observe this setup आफ्टर 3-4 days. ठीक है, यहाँ से आपने कॉर्क की हेल्प से, लिड की हेल्प से इसको बंद कर देना है और 3-4 दिन के बाद देखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बबल्स आर ऑब्जर्व्ड इन द सॉल्यूशन दैट मूव्स अप टू द सरफेस टू फॉर्म अ फ्रॉथ. एन एल्कोहलिक स्मेल कम्स फ्रॉम द फ्लास्क व्हेन यू रिमूव द कॉर्क. ठीक है, बबल्स इस सॉल्यूशन में आपको दिखाई देने लगेंगे, जो कहाँ सरफेस की तरफ मूव करने लगते हैं और अल्कोहलिक स्मेल आती है व्हेन यू ओपन द कोक. इफ अ लाइट मैच स्टिक इज बॉट क्लोज टू द माउथ ऑफ फ्लास्क, इट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, showing that the gas present in the flask is carbon dioxide. The yeast spores introduced in the flask have multiplied and are respiring anaerobically. ठीक है, तो ये एक्टिविटी बड़ी सिंपल है. यू कैन डू इट एट योर होम, बट वन थिंग यू शुड हैव टू रिमेंबर that the flask should be sealed and oxygen content in it should be limited. ठीक है, तो बड़ी सिंपल एक्टिविटी है, करके देखना है इसको. Do you know anaerobic respiration is useful in making alcoholic beverage and bakery items like bread and cakes. In plants, yeast and bacteria, anaerobic respiration results in the production of alcohol and carbon dioxide. This process is used in brewing and baking industries. This process is also known as fermentation. ठीक है, तो ये जो yeast वाला process है वो used for making, this is also said to be your fermentation and is used for making alcoholic beverages and bakery products. Why do we get muscle cramp after heavy physical exercise? Because human muscle can respire anaerobically. However, lactic acid is produced during this process and accumulates in the muscle. Because of this, muscles cannot continue working for long. They get fatigue after some time, causing muscle cramps. Anaerobic respiration in human is less efficient than aerobic respiration for releasing energy. So this explains why human can run faster in shorter distance race, sprint, than over long distances. When an athlete stops after a sprint, she has to breathe faster and deeper for some time to feel normal. Once again, this is to
take in extra oxygen in order to break down the accumulated lactic acid. वो जो lactic acid बन गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथ लॉन्ग करके, जो एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड बन गया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. ऑन द टॉप ऑफ नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, दैट इज द पार्ट ऑफ एरोबिक respiration. The body thus pays back the oxygen debt built up during the sprint. You can see in the picture an athlete experiencing muscle cramps after a sprint. ठीक है, स्प्रिंट के बाद क्या होता है, मसल क्रैम्प हो जाता है. तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो ठीक है कर रहे थे, पर जब लॉन्ग डिस्टेंस उसको कवर करना होता है तो ही शुड हैव टू टेक लॉन्ग ब्रीथ, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन to break down the accumulated lactic acid. Okay, so on the basis of this we are having activity 2 to show that respiration produces heat energy. The activity is about the respiration produces heat energy. Soak some gram seeds in water overnight. Allow them to germinate on moist cotton for 3-4 days. Deactivate half of the seeds by placing them in the boiling water for 2-3 or 3-4 days. Deactivate half of the deactivate कर देना है आपने half of the seeds by placing them in boiling water for 2-3 या 3-4 days. Place the 2-3 minutes. Place the live germinating seeds in one flask and the dead seeds in the other flask. Insert a thermometer into each flask. Record the temperature and seal the flask with cotton wool. टेम्परेचर नोट करना है और दोनों को आपने क्या करना है, फ्लास्क में रखना है और कॉटन वूल के साथ उसको बंद कर देना है. रिकॉर्ड द टेम्परेचर डेली ओवर द नेक्स्ट 5 days. ठीक है, लगातार आपको 5 days टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है. यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो टेम्परेचर चेंजेस इन द फ्लास्क कंटेनिंग बॉइल्ड डेड सीड्स. ठीक है, जिसको आपने 2-3 मिनट्स के लिए उबाला था, बॉयल किया था, उनमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है. हाउएवर इन द अदर फ्लास्क देयर इज स्टडी राइज इन द टेम्परेचर ईच डे. ठीक है, और जिनको आपने जर्मिनेटिंग के लिए रखा था सीड्स को, उनमें क्या टेम्परेचर ईच डे क्या कर रहा है, राइज कर रहा है. वी दिस फाइंड दैट ओनली द लिविंग एंड respiring seeds cause a rise in the temperature. We can therefore conclude that respiration produces heat. तो वेरी सिंपल एक्टिविटी आपने करके देखी है ना. आपको कुछ सीड्स लेना है, उनको 3-4 दिन के लिए भिगा के रखना है और मॉइस्ट कॉटन में रखना है. आधे सीड्स को और आधे को क्या करना है, अपने 2-3 मिनट्स के लिए बॉईल करना. जो आपकी 3-4 डेज के बाद जर्मिनेटिंग वाले सीड्स थे उनको एक अलग फ्लास्क में रखना, और जिनको आपने बॉईल किया था वो डेड सीड्स हो जाते हैं, उनको आपने दूसरे फ्लास्क में रखना. फिर आपने मॉइस्ट कॉटन से क्या करना है, उसको बंद कर देना है फ्लास्क को, और टेम्परेचर नोट करना है. तो जो आपके जिन सीड्स को आपने बॉईल किया था, डेड सीड्स हैं, उनमें कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा. बट जहाँ पर आपके ने अपने सीड्स रखे थे, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स, वहाँ पर टेम्परेचर आप नोट करोगे तो एवरी डे इट गो ऑन इंक्रीजिंग. तो हैंस इट प्रूव दैट respiration produces heat. So this is all about today. Thank you and have a nice day.